Hi, good morning to everyone. Today we're gonna talk about a car 360-degree camera presented by VP1. So the VP1 car 360 camera is one of the universal product that has been designed basically to fit with most of the car models. This camera comes with a package. We will see the unboxing of this whole camera system, and also in the later words of this video we will check out that how to do the installations. What's the planning? And how is it compatible with most of the car models. So let's quickly get into it. To show it, this is the box. If you open the box, these are available inside. You can see this is the DVR machine, and we have 4 cameras here. These 4 cameras get installed. One is for the front part, another is the rear, the left ORVM and the right ORVM. This is the wire, and you have a remote control here, so control this. And we also have the wiring settings, so let's see how it's doing. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. If we open this, as I said, this is the DVR machines. These are the cameras which is for the ORVMs. Is mentioned over there which goes where. So you have a color coding. So these color codings you have to match particularly. These are the front and rear camera. This is also given inside. Here you get the drill machine, make the holes properly. You put inside any drill, and then you can hold it up in your mirror. Also, you have a bracket inside this. So few brackets for front and rear. So this bracket basically take this camera like that, and here in these sections you can put this like that, and with that you can jack up on the car. मजा आया. To make it tighter, you also have some rubber washers. These will use for the side view mirrors, right? So all the degrees are mentioned. So if it is a 0 degree, this is a 12 degree adjustment in case you need to use this. So these degrees are also mentioned in the rubber itself. Now let's see the wiring part. For what's the wiring? So this is basically, you have this one with this white marking, and the other end you have this one, and this is the main cable, right? And this main cable is the front part. This goes into this, right? After that, you have a different color codes here, and you have to put as per the color codes inside this. We can see it's mainly mentioned, all the codes are mentioned with the markings as well. So this is written as IR. So IR means the infrared. So this is the remote sensor infrared. This comes here.
this is a remote sensors. Put inside this IR section. Okay, this is done. As per the color codes, we can match this. This is the USB part. You can bring it out. You can fit your data card or USB, so to record the driving pattern. This is the video part, which goes connect with the Android or the screen. This needs power as well. It's a power connection. And let us see. So we have these 3 wires. So these wires we need to fit accordingly. This is basically, so as per the color codes we will fit here. This is, first we are fitting this. It has a white color coding, and here we have this one, the blank one, right? And we have to make sure the pins also, so that we do it carefully, because these pins are very tiny, and these also have the same sockets as well. So you can put it inside. Also, for your marking here, the arrow marks are given over this, so try to mind these arrow marks, how to push together. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. Once this is connected, the other end you can connect with the camera part. So other end is also the same. Check out the markings, take the camera end, and then you can put it inside. So this camera is connected. So here you have to fit in this camera. It is a connection for the front camera, right? This will go to the front. After the front is connected, similarly you can connect the right and left ones. And once everything is fit, now you give power connection. So this has this light white wire, so this white wire go to the positive end of the light. So if you are connecting this with the rear camera, the rear brake light positive will go connect with this. Okay, for the right or left overview, this will go get connected with this, and the indicator light positive connection will go connect with this. We'll see in the installation part. And you have this remote. After the installations, with this remote you have to use this button to power on the DVR, and this to go back, right? With this OK button you can get into the settings, and after going to the settings you can change the settings to, you can change the camera mode and whatever. You can customize the whole view, right? Even in the recording part and as well. So let's move on to the other part of this video. नहीं, मुझे इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है. हाँ जी. ये जो 3 तार है दिख रहा है ना, ये इग्निशन का हो गया +12 वोल्ट. ये आपका +12 वोल्ट डायरेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है. ये तो ग्राउंड है ब्लैक वाला, ठीक है. अच्छा, इधर में जो ये पीछे बैक वाला जो कैमरा है, मतलब बैक वाला जो कैमरा का कनेक्शन है, ये वाला है, टेप में जाएगा ये वाला, ठीक है. और ये वाला उसका सिग्नल ये यहाँ पे देखिए, इधर में है, ये रहा था, ये रहा. उस साइड से जो तार आएगा, ये मेन कपलर है ना, ये मेन कपलर में जो AVI का जो सॉकेट है, AVI का, ये सॉकेट तो टेप में जाएगा, टेप में जाएगा, ठीक है. टेप में जा रहा है ये वाला, ये रहा. अच्छा, टेप के सॉकेट में आपका ये है, देखिएगा, एक तो रिवर्स बोल के लिखा रहता है, इधर दिखाइए, रिवर्स टेप में रहता है वो वाला. ऑडियो स्टूडियो में लिखा रहता है रिवर्स बोल के, ये रहा. ये बड़ी अच्छी बात कही है, ठीक है. जैसे यहाँ पे 4 कलर है, येलो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ठीक है. अब
आपका येलो हो गया आपका ये पीछे का कैमरा का, ये बैक कैमरा का, ठीक है। अच्छा ये ब्लू वाला हो गया जो, ये हो गया आपका राइट व्यू का, राइट मिरर में जो लगता है, ठीक है। अच्छा ये है आपका लेफ्ट व्यू का, लेफ्ट वाला रेड वाला लेफ्ट व्यू, और ये रहा फ्रंट का, ये ब्लैक वाला फ्रंट में जो लगेगा, ठीक है। और ये जो दो तार है, ये ग्रीन वाला और ये वाला, इसको कुछ नहीं करना है। अच्छा ये इसमें ऑक्स टाइप का, ये जो ऑक्स वाला है अच्छा ये रहा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये रहा ईयर का, ये रिमोट का, ठीक है। इसको ये नहीं लगेगा तो रिमोट नहीं काम करेगा, इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको जहाँ भी लगाना है लगा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, इधर में कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये वाला ईयर है, ये अंदर से जाएगा आपको, और इधर से वायरिंग को निकाल दीजिए बस, समझे बस। अच्छा अभी इस वाले वायर में देखिए चार और तार रहता है, ये कैमरा में लगा जाती है, 4 तार कैमरा के लिए आता है, तो ये कैमरा में जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका डायरेक्ट चलाएगा टेप के पास, ये वाला जो मेन सॉकेट है ना वायरिंग का, उस सॉकेट में लगेगा। अच्छा इस सॉकेट में देखिए, ये जो व्हाइट वाला तार है, ये जो एक सिंगल था, ये जो तार है आपका मिरर में जो इंडिकेटर वाला जो लाइट आता है था पॉजिटिव वाला, वो वाला में जैसे इंडिकेटर जब देते हैं हम लोग, तो उस साइड का मिरर में लाइट जल रहा होगा, बाहर दिखा दीजिए, जाकर देखना पड़ेगा, जल रहा है। हाँ वो जो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है ना, तो ब्लिंक वाला लाइट का पॉजिटिव इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट का रहा तो लेफ्ट का ही हो रहा, ऐसे सब में देना पड़ेगा। रियर वाला जो आपका बैक साइड वाला जो है, ये बैक गियर के साथ होगा, येलो में बैक गियर के साथ हो जाएगा। अच्छा सीव इसका, ये फ्रंट वाला जो है, फ्रंट में आपको कुछ नहीं करना है, फ्रंट का कैमरा डायरेक्ट लग जाएगा, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं लगना है, ठीक, बस खत्म। उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट फिट कर दीजिए जहाँ पे लगे, और इंडिकेटर देने से ये काम करता है, ठीक है। ये राइट साइड का इंडिकेटर पे काम करेगा। अच्छा ये रहा बैक किया, ठीक है, बैक गया, ये रिमोट। अच्छा अगर आपको सिर्फ ऑन करना है कैमरा तो यहाँ से भी चलता है,